Very good morning. Today we are going to discuss regarding the classification and applications of the transformer. I am Dr. Swati Sharma from Raj Engineering College. In this lecture today, we are going to discuss about the classification of transformer, importance and application of it with some subjective and subjective questions for your assignment purpose. Now, what is transformer? This we already discussed in detail with construction and working in the previous lecture, but just for an introduction again, for overview purpose, let us know what is transformer. Transformer is a static machine which used for transforming power from one circuit to another without change in frequency with phase shift of 180 degree, and we can change the value of voltage, that is we can step up and step down the voltage as per our requirement. Now classification of transformer. ट्रांसफार्मर की अगर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कई सारे फीचर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया है, कितने फेजेस के लिए है, उसकी यूटिलिटी कहाँ हो रही है, उसका पर्पस कहाँ है, उसकी कूलिंग का मीडियम क्या है। तो हम इस तरीके से देखें तो 8 तरीके से हम ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ट्रांसफार्मर का वो ओवरलैप कर सकता है, जैसे कि अगर कोई ट्रांसफार्मर है वो अगर 3 फेज का ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, साथ के साथ वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी हो सकता है एट द सेम टाइम, मतलब दो क्लासिफिकेशन को वो ओवरलैप कर सकता है एक सिंगल ट्रांसफार्मर। ये एक याद रखने वाली बात है। क्लासिफिकेशन बेसिकली हम 8 तरीके से क्लासिफाई करते हैं ट्रांसफार्मर को। सबसे पहली चीज़ होती है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन, कि उसको डिज़ाइन कैसे किया गया है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया गया है। हम इस चीज़ को डिवाइड करते हैं बेसिकली दो तरीके से, दैट इज़ पहला होता है कोर टाइप और दूसरा शेल टाइप। अगर हम एक एक को बाद में पूरे को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है वाइंडिंग अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंगली। वाइंडिंग अरेंजमेंट्स में होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, सेकंड होता है 2 वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग एंड 6 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट कम ऑन द बेसिस ऑफ फेज, दैट इज सिंगल फेज और 3 फेज। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन एंड द आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। Very good morning. Today we are going to discuss regarding the classification and applications of the transformer. I am Dr. Swati Sharma from Raj Engineering College. In this lecture today, we are going to discuss about the classification of transformer, importance and application of it with some subjective and subjective questions for your assignment purpose. अब हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अपन ने जो पॉइंट लिया था वो था कंस्ट्रक्शन वाइज या डिज़ाइन वाइज। जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन वाइज की, तो हमने देखा था जो उसके प्राइमरी और सेकेंडरी पॉइंट्स हैं हमने उसको लेमिनेटेड स्टील कोर काम में लिया गया है। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम कि ये जो क्लासिफिकेशन है इसके जो ये किस तरीके से अपनी डिवाइड किया है, कोर टाइप में और शेल टाइप में। अगर हम बात करते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर, in that situation what will happen in the core type transformer, the magnetic circuit consists of two vertical legs or limbs
with two horizontal sections that called yoke. To keep the leakage paths to a minimum, half of each winding is placed on each leg of the core. So, the low voltage winding is placed next to the core and the high voltage winding is placed around the low voltage winding so that it will reduce the insulating material that is used. Thus, the two windings are arranged in a concentric. This can be shown in the figure. We can see how concentric coils are created, or cylindrical windings also we can see. In this case, from the figure we can see that the circular cylindrical coils, they have a fair advantage of having good mechanical strength. The cylindrical coils will have different layers, with each layer will be insulated from the other one with the help of the materials like paper, cloth, etc. Both low voltage and high voltage windings are shown. In this figure we can see that how low voltage coil is inside and after that high voltage is placed. पहले हमने low voltage की coil लगा रखी है, उसके बाद में high voltage की coil है. पहले लो वोल्टेज का इंसुलेशन दे रखा है, फिर हाई वोल्टेज का इंसुलेशन, फिर वापस लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, एक के बाद एक के बाद एक हमने लगा रखा है. इनिशियली जो स्टार्टिंग करी है हमने वो लो वोल्टेज के साथ करी है. इसका दूसरा व्यू भी देख सकते हैं हम, कट व्यू और अपर साइड से जो अपन व्यूज देखते हैं. The low voltage winding are placed nearer to the core as it is the easiest to insulate. क्यों? अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई लो वोल्टेज को ही हमने पास में क्यों रखा है, हाई वोल्टेज को क्यों नहीं लिया? तो उसका कारण है ये कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को हमने इसलिए पास में रखा है कोर के, क्योंकि उसको इंसुलेशन उसमें देना आसान होता है और इफेक्टिव कोर एरिया ऑफ द ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड विद द यूज ऑफ लैमिनेशंस एंड इंसुलेशन. नेक्स्ट कम द शेल टाइप ट्रांसफार्मर. From the figure you can see that in the shell type transformer, both primary and secondary windings are wound on the central limb, and the two outer limbs complete the low reluctance flux path. Each winding is subdivided into sections. Low voltage and high voltage subsections are alternately put in the form of sandwich. Such a winding therefore is called sandwich or disc winding. इसका हम फिगर देख सकते हैं किस तरीके से उसके अंदर कैसे करा हुआ था और इसमें किस तरीके से वाइंडिंग्स दे रखी है, दोनों का डिफरेंस. इसके अंदर भी इंसुलेशन के लिए हम पेपर को यूज में लेते हैं डिफरेंट लेयर्स के लिए. These insulation spaces form the horizontal cooling and insulation ducts. Such a transformer may have the shape of simple rectangle or may also have distributed form. नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रखी है किस तरीके से हमने शेल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म शो कर रखा है. जो 3D व्यू आप जिसको देख सकते हैं किस तरीके से हमने उसको शो किया हुआ है. There may be cases when smooth tank surface will not be able to provide the needed cooling area. In such cases, the sides of the tank are assembled in such a way with the radiators on the sides of the device. The oil used for the cooling purpose must be absolutely free from alkali, sulfur and most important moisture. क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर अगर उसके अंदर आ जाता है तो पूरा सिस्टम जो है ऑयल की वो प्रॉपर्टी रहती ही नहीं है और वो यूजलेस हो जाता है. Most manufacturers prefer to use shell type transformer for high voltage applications or for multi-winding design. Other parameters that are compared for the selection of transformer types are voltage rating, kilovolt ampere rating, weight, insulation stress, heat distribution and so on. Next come on the basis of winding arrangements. Winding arrangements से बात करें तो हम चार तरीके से डिवाइड करते हैं. पहला आता है ऑटो ट्रांसफार्मर जो जनरली बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है. नेक्स्ट है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, थर्ड है 3 वाइंडिंग एंड देन 6 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो जो भी नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर 2 वाइंडिंग्स दे रखी है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के अंदर डिफरेंट होती है. मगर ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर डिफरेंट नहीं होके एक पे ही हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को
फिजिकली जो हम कनेक्ट करते हैं ईच अदर को, फिजिकली कनेक्टेड होते हैं और मैग्नेटिकली ये कनेक्टेड होते हैं एक साथ ही. There is one common winding which forms both primary and secondary winding, in which voltage is varied by changing the position of secondary tapping of the body of the coil. जैसा कि हम देख सकते हैं इस फिगर के अंदर जो शो कर रखा है ए बी और सेंटर में सी दे रखा है, ये एक वाइंडिंग में ही हमने इसको डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी पोर्शन को, सेकेंडरी पोर्शन को. ऑटो ट्रांसफार्मर एक तरह का स्पेशल टाइप का आप कह सकते हो पावर ट्रांसफार्मर ही होता है. This is different from conventional two-winding transformer, which has the primary and secondary completely isolated from each other, but magnetically linked by a common core. An auto transformer is initially cheaper than a similarly rated two-winding transformer. The auto transformer is considered unsafe for use on ordinary distribution circuit. This is because the high voltage primary circuit are connected directly to the low voltage secondary. सेपरेट नहीं हो, एक साथ ही कनेक्टेड हो, इसलिए ये थोड़ा अनसेफ रहता है यूज में लेने के लिए जहाँ हाई वोल्टेज प्राइमरी सर्किट्स हो. नेक्स्ट इज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. टू सेपरेट वाइंडिंग्स as a primary and other as secondary are used. Both windings are magnetically coupled. This is what in two winding transformer. If we talk about the three winding transformer, in this three windings are used, each work as primary and secondary. Also primary and secondary windings are conductively coupled. They are three-phase auto transformer, we can say in other words. If we talk about six-winding transformer, three windings in primary and three windings in secondary are used. They are three-phase transformers. They are connected in either star connection or delta star delta or delta star. Now the third one is on the basis of phases. As we know, अगर हम phases की बात करें तो ट्रांसफार्मर जो जनरली यूज में लेते हैं वो थ्री फेज पावर सिस्टम में काम में लिया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर. बट व्हेन साइज मैटर्स इट इज प्रेफरेबल दैट टू यूज ए बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वर्सेस थ्री फेज ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी है इसका एज कम्पेयर टू अगर आप पूरा थ्री फेज ट्रांसफार्मर लेके जाते हो. अगर सिंगल फेज की बात करें तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है. There are two types of windings in the transformer. The winding to which AC supply is given is termed as the primary winding, and the secondary winding where load is connected. अब बात करते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर की. थ्री फेज ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, अगर हम तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को लेके कनेक्ट कर दें टुगेदर, सारी प्राइमरीज को एक साथ और सारी सेकेंडरीज को एक साथ, तो वो उससे क्या होगा, वो एक बिहेव करेगा थ्री फेज ट्रांसफार्मर की तरह. That means a bank of three-phase single transformer connected together, which acts as a three-phase transformer. Three-phase supply is mainly used for electrical power generation, transmission, and distribution for industrial purpose. Now, the comparison between the three-phase and single three-phase and bank of three single-phase transformers for three-phase system. जब बात आती है जनरेशन की, ट्रांसमिशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, इलेक्ट्रिकल पावर की, तो ट्रांसफार्मर की बात किए बिना तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती. और अगर हम बात करें इसको इकोनॉमिकल तरीके से करने के लिए तो थ्री फेज सिस्टम की हम बात करते हैं, और इस चीज़ के लिए हमको जो है थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत पड़ती है, या हम कहें कि हम सब उनको कनेक्ट करके एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाएं या सिंगल फेज के थ्री लें. So a single three-phase transformer costs around 15% less than the bank of three single-phase transformer. So for a very big transformer, it is impossible to transport a large three-phase transformer to the site, and instead of that, it is easier to carry the three single-phase transformers, which are erected separately to form a three-phase unit. Next आता है अपना on the basis of number of turns और voltage level. अगर वोल्टेज लेवल के नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो तीन तरीके से डिवाइड किया जाता है, स्टेप डाउन, स्टेप अप एंड आइसोलेशन, तीन तरीके से. नेक्स्ट इज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. टू सेपरेट वाइंडिंग्स as a primary and other as secondary are used. Both windings are magnetically coupled. This is what in two winding transformer. If we talk about the three winding transformer,
In this, three windings are used, each work as primary and secondary. Also, primary and secondary windings are conductively coupled. They are three-phase autotransformer, we can say in other words. If we talk about six-winding transformer, three windings in primary and three windings in secondary are used. They are three-phase transformers. They are connected in either star connection or delta star delta or delta star. इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों में काम में लिया जाता है अलग अलग एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली, जैसे कह रही हूँ। अब बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट है किसके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इंक्रीज द लो प्राइमरी वोल्टेज टू ए हाई सेकेंडरी वोल्टेज, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें इनका रेशो चेंज कर दिया जाता है और आउटपुट के अंदर हमको जो मिलता है वो स्टेप अप होके मिलता है, इसलिए इसका नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम में आता है, जहाँ पे हम स्टेबलाइजर यूज में ले रहे हैं, इन्वर्टर्स यूज में ले रहे हैं, कहीं हमको हायर वोल्टेज लेवल कन्वर्ट करके आगे आउटपुट में चाहिए, वहाँ काम में लिया जाता है ये। और अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टेप डाउन और स्टेप अप का बता रखा है, यानी प्राइमरी का वोल्टेज स्टेप अप के अंदर और सेकेंडरी का वोल्टेज, यानी प्राइमरी की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है जिसको हमने स्टेप डाउन करके आगे भेजा है, तो सेकेंडरी की वैल्यू हमको कम मिली है, यानी प्राइमरी के देखिए नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा दिख रहे हैं हमको स्टेप डाउन में एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। यही इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर। यहाँ पे प्राइमरी के टर्न्स कम है और सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा हैं। सिमिलरली हम उसको इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर हम देख रहे हैं वोल्टेज और टाइम के बीच में जो ग्राफ बना हुआ है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है और प्राइमरी का वोल्टेज कम आ रहा है, किसमें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। जैसा कि इसका नाम है, ये कोई वोल्टेज कन्वर्ट करके नहीं देता है अपने को, लेकिन ये एक तरीके से ये काम में ले जाता है, आइसोलेट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी को, इसलिए इसका नाम भी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। That means this transformer does not have any electrical connection between primary and secondary. It is also used as an isolation barrier where the conduction happens only with the magnetic flux. ये हम सिर्फ एक सेफ्टी पर्पस के लिए हम इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, कि हम इसकी यूटिलिटी क्या है। अब इसकी यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी इसकी दो तरीके से है, कि हम इसको इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यूज में ले रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज को ले रहे हैं तो बेसिकली हम पावर डोमेन से जो है डील कर रहे हैं। पावर डोमेन की बात आती है तो हम इसको चार तरीके से डिवाइड करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, मेजरमेंट ट्रांसफार्मर और प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर। मेजरमेंट ट्रांसफार्मर को हम दो तरीके से वापस डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन की बात करें तो पल्स ट्रांसफार्मर और ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर। एक एक को हम डील करते हैं। अब पावर डोमेन की बात करते हैं अपन तो पावर की बात आती है तो उसमें पावर जनरेशन भी है, मेजरमेंट भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं और इन सबको हमको सेफ तरीके से पावर कन्वर्जन करना है। तो इन सब चीज़ों में हमको अलग अलग तरीके के ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत पड़ती है। पावर ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो ये मेनली इंस्टॉल्ड होता है जनरेटिंग स्टेशंस में और ट्रांसमिशन सब स्टेशंस के वहाँ पे। दे आर डिजाइन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 100%। दे आर लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। वेरियस टाइप्स ऑफ रेटिंग्स हैं इसकी और ये मेनली 200 MVA से अबव ही रेटेड किया जाता है, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज के ऊपर हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट कंज्यूमर तक डायरेक्टली नहीं दे सकते, तो हमको एक डिजायर्ड लेवल तक इसकी वैल्यू नीचे लानी पड़ती है, स्टेप डाउन करना पड़ता है, और वो हम स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर की हेल्प से करते हैं। इफ पावर ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन द ट्रांसमिशन नेटवर्क, द लोड फ्लक्चुएशन विल बी वेरी लेस, and as they are not connected at the consumer end directly, but if connected to the distribution network, there will be fluctuations in the load. When the transformer is loaded for 24 hours at transmission station,
Thus, the core and the copper loss will occur for the whole day. A power transformer is used primarily to couple the electrical energy from a power supply line to a circuit system or to one or more components of the system. A power transformer used with solid state circuits is called a rectifier transformer. नेक्स्ट कम द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसकी भी वेरियस अलग अलग रेटिंग्स दे रखी है, मगर इसकी रेटिंग जो है 200 MVA से कम होती है। And the use in the distribution network to provide the voltage transformation in the power system by stepping down the voltage level where electrical energy is distributed and utilized at the consumer end. The primary coil of the distribution transformer is wound by enamel coated copper or aluminum wire. A thick ribbon of aluminum and copper is used to make the secondary of the transformer, which is high current, low voltage winding, and various insulation purpose or we can say methods are used for it, like resin impregnant paper, oil. Distribution transformer can be further categorized into based on the type of insulation used. ड्राई टाइप का यूज में ले रहे हैं, लिक्विड इमर्स टाइप का यूज में ले रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेशन ऑल्सो हम इसको फर्दर डिवाइड। सेकेंड चीज, हम इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को डिवाइड कर सकते हैं कि भाई हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये किस तरीके से लोकेटेड इनसाइड है, आउटसाइड है, किस तरीके से किया जाता है। Distribution transformers are step-down transformers which convert high-grade voltage to the end consumer required voltage. It can also be single phase or three phase. जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो ओवरलैप कर सकते हैं अपनी क्लासिफिकेशन। इसकी यूटिलिटी की बात करें तो पंपिंग स्टेशन में काम में आता है, पावर सप्लाई फॉर द ओवरहेड वायर रेलवे इलेक्ट्रिफाइड विद AC वहाँ काम में आता है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरियाज में काम में आता है, विंड मिल्स के थ्रू जहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है वहाँ पे भी ये काम में आता है। नेक्स्ट कम द मेजरमेंट ट्रांसफार्मर। जब हम बेसिकली बात करते हैं मेजरमेंट की तो जनरली सबसे पहले जो दिमाग में चीज़ आती है वो आता है करंट वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो काम में लिए जाते हैं वो मेजरमेंट ट्रांसफार्मर्स जैसे करंट ट्रांसफार्मर है, इनको हम जिसमें डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। Two separate windings as a primary and other as secondary are used. Both windings are magnetically coupled. This is what in two winding transformer. If we talk about the three winding transformer, in this three windings are used, each work as primary and secondary. Also primary and secondary windings are conductively coupled. They are three phase auto transformer, we can say in other words. If we talk about six winding transformer, three windings in primary and three windings in secondary are used. They are three-phase transformers. They are connected in either star connection or delta star delta or delta star. The secondary and the emitter are conveniently mounted in the handle of the device, and the dial allows a number of current ranges to be gauged accordingly. Next comes the potential transformer. As the name indicates, potential और voltage, हम उसको voltage मॉनिटरिंग के काम में लेते हैं और केयरफुली डिजाइन करना पड़ता है इसको एक्सट्रीमली एक्यूरेट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह ये एक्ट करता है। वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियोज हैं इसके। Transformers for this service are always the shell type because this construction has been proven to provide better accuracy. Now, the potential transformer is also called voltage transformer. The primary is connected across the high voltage line whose voltage is to be measured, and all the measuring instruments and the meters are connected to the secondary side of the transformer. The main function of the potential transformer is to step down the voltage level to a safe limit
or value. The primary winding of the potential transformer is grounded as a signal. Now next from the protection transformer. जो मेजर डिफरेंस आता है प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर के अंदर वो आता है उसकी एक्यूरेसी का। प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर की एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू मेजरिंग, क्योंकि इसका नाम है प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर। तो दैट मीन्स उसकी एक्यूरेसी का लेवल मेजरमेंट ट्रांसफार्मर के कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्यूरेट होना उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ में लिया जा रहा है एक तरह से। नेक्स्ट आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक डोमेन। ये तो बात करते हैं अपने पावर डोमेन के चारों डिस्कस किया। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन की। अब इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं वो स्मॉल मिनिएचर साइज के होते हैं जो कि हम पीसीबी पे माउंट कर सकें और उनको किसी भी प्रोडक्ट के अंदर हम उसको इनक्लोज जो है कर सकें। इसलिए हम जो है पल्स ट्रांसफार्मर और ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर दो तरीके से इनको डिवाइड करते हैं। पल्स ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करते हैं, वो एक इलेक्ट्रिक पल्स कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की जनरेट करते हैं और पीसीबी पे माउंट किए हुए होते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिजिटल सर्किट्स के अंदर काम में लेते हैं जहाँ पे पल्स जनरेशन की जरूरत पड़ती है इन एन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में। Therefore, the pulse transformer isolate the primary and the secondary and distribute primary pulses to the secondary circuit, often digital logic gates or drivers. Next one is audio output transformer, जो कि जैसे एम्पलीफायर में काम में लिया जाता है। कॉमनली जो हम काम में लेते हैं उसको एम्पलीफायर्स में वहाँ काम में लेते हैं जहाँ इम्पीडेंस मैचिंग की जरूरत होती है। ऑडियो ट्रांसफार्मर balances the amplifier circuit and loads, typically a loudspeaker. The audio transformer can have multiple primary and secondary coils separated or centered. Next come on the basis of place of use. आप उसको यूज में कैसे ले रहे हो? इंडस्ट्री है कोई तो इंडोर आप उसको रूफ के अंडर आप उसको काम में ले रहे हो, कोई प्रोसेस इंडस्ट्री में लगा हुआ है तो। और अगर आउटडोर ट्रांसफार्मर है जैसे डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का ट्रांसफार्मर हुआ जो कि सब स्टेशन पे लगा हुआ होता है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ कोर मटेरियल। अब कोर मटेरियल की बात करें इसको अपन तो अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं एयर कोर, आयरन कोर, इस तरीके से। तो आयरन कोर की बात करते हैं पहले। आयरन कोर ट्रांसफार्मर यूजेस मल्टीपल सॉफ्ट आयरन प्लेट्स एज द कोर मटेरियल because of its excellent magnetic property, and the flux linkage of the iron core transformer is very high. Hence, efficiency of the iron core transformer is also high. The soft iron core plates can be available in multiple shapes and sizes. अलग अलग शेप और साइज हो सकते हैं, जैसे कॉमन शेप से ई, आई, यू, एल। Iron plates are thin and multiple plates are bunched together to form actual core. For example, E लेटर जिस तरह से बनता है, जैसे आप इसमें देख सकते हो ई, आई, एल, किस तरीके से हमने बंच किया टुगेदर। तो ई का फॉर्म बन गया, आई का फॉर्म बन गया, एल का बन गया। फेराइट कोर की बात करें तो जैसा कि इसका नाम है, तो इसके अंदर जो हम यूज में ले रहे हैं कोर वो फेराइट मटेरियल है। क्यों काम में ले रहे हैं? क्योंकि उसकी हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, जिसके कारण से वो लो लॉसेस और हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए हम इसे काम में ले सकते हैं। ड्यू टू दिस फेराइट कोर ट्रांसफार्मर्स को हम कहाँ यूज में ले सकते हैं? एसएमपीएस में यूज में लेते हैं, आरएफ रिलेटेड एप्लीकेशंस में यूज में लेते हैं हम उसको। Ferrite core transformers also offer a different type of shapes, sizes depending on the application requirement. Next comes the toroidal core. टोरॉइडल कोर ट्रांसफार्मर जो होता है वो उसके टोरॉइड शेप के कारण जाना जाता है। टोरॉइड शेप कोर मटेरियल होता है उसका, यानी एक डोनेट की तरह या एक रिंग की तरह आप इसको कह सकते हो, वैसा शेप्ड कोर मटेरियल होता है। और ज़्यादातर जो है वाइडली यूज में लिया जाता है, इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती है इसलिए, क्योंकि एक रिंग शेप में होता है। लीकेज इंडक्टेंस इसका बहुत कम होता है और the windings are relatively short and weight is much less than traditional for the same rating transformers. Air core की बात करें तो primary and secondary windings wound on non-magnetic strip where the flux linkage between primary and secondary is through the air. But the hysteresis and eddy current losses which are dominant in iron core type are less or comparatively eliminated in air core type of transformer.
In air core transformer, the primary coil is supplied with alternating current, which produces an electromagnetic field around it. However, air core transformer produces low mutual inductance compared to physical core material such as iron or ferrite. Due to the absence of physical core material, it is very light in terms of weight. Here we can see how air core transformer. Now the last one, on the basis of cooling. Because we know heat is generated in the transformer. So for the dissipation of heat and for the safer side, हमको कूलिंग करनी पड़ती है और कूलिंग कई तरीके से की जा सकती है। इसके अंदर कूलिंग करने के कई सारे हमारे पास तरीके हैं इसके अंदर। The major factor for the generation of heat in the transformer is the various losses like hysteresis loss, eddy current loss, iron loss and copper loss. Among all the various losses, the major contributor of the heat generation is the copper loss. इसको हम I square R loss भी कहते हैं. No transformer is truly an ideal transformer, and hence each will incur some losses, most of which get converted into heat. If this heat is not dissipated properly, the excess temperature in the transformer may cause serious problems like insulation failure. So it is obvious that transformer needs a cooling system. Transformers can be divided in two types, dry type transformer and oil immersed transformer. Now for dry type transformer, air natural and air blast transformer is there. And for oil immersed transformers, oil natural air natural, oil natural air forced, oil forced air forced, oil forced water forced, oil natural water forced. The air natural method of cooling is used for cooling small low voltage transformers where the natural circulation of the surrounding air is utilized to carry away the heat from the transformer core and the winding. Whereas in the air blast method, the transformer is cooled by the continuous blast of cool air produced by a fan or forced through the winding. The air supplied is filtered to avoid the dust entering the ventilating ducts. Transformers with high ratings are oil cooled. Oil, in addition to the cooling, provides insulation to the windings. The transformer is placed inside the tank filled with transformer oil and tank is sealed. Heat is radiated to the atmosphere through the outside surface of the transformer tank. To increase the radiating area, hollow tubes or fins are provided with the transformer tank. Oil circulates throughout these radiating tubes or fins and accelerates the heat dissipation. Heat generated by the loss in the core and in the winding heats the oil. Hot oil will flow in the upward direction and its place will be occupied by cool oil from the top. Its heat will be radiated out of the atmosphere through the radiating ducts and hence it will flow in the downward direction. Thus, there will be a continuous flow of oil inside the transformer tank. The efficiency of heat dissipation can further be increased by creating a blast of air directed over the outer surface of the radiating tubes, as in done in the case of oil blast type of cooling. Now, next other application of it. Transformers are used for impedance matching. It is used to increase or decrease the alternating voltages in electrical power applications, that is a step up and a step down. It is also used as a rectifier. It is also used in voltage regulators, voltage stabilizers, power supply, like current transformer and potential transformer for the measurement purpose in the industry. Isolation transformer is used for the safety purpose. Auto transformer has many applications like the starting of an induction motor or variable output. Now next is importance of transformer. As we all see the applications of different types of transformer, now transformer is extremely important in the power transmission and distribution system.
In power generating plant, power is transmitted at high voltage, which can be possible by transformer only. And at the power plant, a step-up transformer is used for transmission, as by high voltage power transmission, so that cost will be reduced, and electric we can say electric power economical way. But at the home side, or you can say on the consumer side, we have we must use, or we are using the low voltage by the transformer. So with the help of a step down transformer, the value of voltage is reduced for the consumer purpose. Yeah. That means at the receiving end, voltage is reduced by the step down transformer. So we can imagine that transformer is an essential part of power transmission. The transformer not only just used in power transmission and receiving process, but it is also used in measurement. Voltmeter, ammeter, relays, etc. are the examples of it. Now, for dry type transformer, air natural and air blast transformer is there. And for oil, some subjective questions. Thank you.